जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम देखेंगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड what is the major concern of applied linguistics and what is the difference between linguistics and applied linguistics. Okay, you can see applied linguistics and linguistics applied. What is the difference between these two terms? Okay, and what is the difference between applied linguistics and second or foreign language teaching? What is the difference between these things? So, in this PPT, in this lesson, we will see these things and sort of different problems about this you can say concern. तो यहाँ पर हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस भी आएंगी, इसकी जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, गोल्स भी आएंगे, इसके जो है वो बेनिफिट्स आउटकम्स भी आएंगे जो रियल लाइफ में हम वी कैन सी एंड वी कैन फील एंड वी कैन ऑब्जर्व। ओके, और इसके अलावा जो है कि applied linguistics is often said to be concerned with solving or at least ameliorating social problems involving language. लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हमें रियल लाइफ के अंदर, रेगुलर लाइफ के अंदर हमें फेस करना पड़ती हैं, द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज ओनली अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. इट इज सिंपली वी कैन सी प्रॉब्लम्स अप्लाई लैंग्वेज कंसर्न इटसेल्फ. ये कौन सी, हाउ वी कैन टीच लैंग्वेज बेटर, ये चीज़ इसमें कंसर्न की जाती है. हाउ कैन वी डायग्नोज स्पीच पैथोलॉजीज बेटर, हाउ कैन वी improve the training of translators and interpreters, how can we write a valid language examination, how can we evaluate school bilingual program, how can we helpfully discuss the language of a text. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिनके अंदर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स यूज़ होती है. ठीक है, इसी तरह हाउ वी कैन कंपेयर द एक्विजिशन ऑफ यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज. ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को सब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का यूज़ करते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे that were formulated by different scholars or different linguists you can say, उसमें पिट कॉर्डर का नाम आता है, द फाउंडिंग फादर ऑफ ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्ट्स एंड लिंग्विस्टिक्स, एंड दैट इज़ इन 1950s में पिट कॉर्डर का नाम आता है एंड ही इज़ वेरी फेमस लिंग्विस्ट यू कैन से. And interdisciplinary, according to him, interdisciplinary field of research and practice dealing with practical problems of language and communication. जो हमारे रियल लाइफ में जितनी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और इसी तरह कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट, उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को यूज़ करते हैं. और इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है, study of language and language related problems in specific situations in which people use and learn language. ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स in which in specific situations in which people use and learn language. और थर्ड इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, ये रिचर्ड ने 2002 के अंदर ये डेफिनेशन की थी और वो क्या थी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इन रिलेशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इन रिलेशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए, यानी टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी स्टडी लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स. ये सारी चीज़ें कह लें कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को कवर करती हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, और इसी तरह आगे हम देखा स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इन रिलेशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, फिर इसी तरह applied linguistics, the theoretical and empirical investigation of real world problems in which language is the central issue. तो जितनी रियल लाइफ की theoretical and empirical investigations of real world problems हमें करना पड़ती हैं, जिसमें लैंग्वेज एक सेंट्रल जो है वो इशू होता है,
उन तमाम को in all these things we use the concepts of applied linguistics. Okay, so Chris Brumfitt ने ये concept दिया था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में आती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, और जिसमें लैंग्वेज यूज़ होती है और सेंट्रल इशू जिसमें लैंग्वेज होता है, तो वो उसमें हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का यूज़ करते हैं. और इसी तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो यूज्ड, यू कैन से how it is learned, how it is acquired, and how different real life problems we can solve with the help of this, you can say, with the help of language. So in all these things we have to use, we have to, you can say, learn, we have to understand the knowledge of applied linguistics. Okay, तो इसी तरह प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ, इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था स्मिथ और कैल्स मर्सिया. 2003 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था स्मिथ और कैल्स मर्सिया ने कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर. इसी तरह द फोकस ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज ऑन ट्राइंग टू रिजॉल्व लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स दैट पीपल एनकाउंटर इन रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हमें, रियल वर्ल्ड से मुराद क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ. रियल वर्ल्ड मीन बाय रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं, you can say relate to language, that we discuss in you can say applied linguistics. Whether they be learners, teachers, supervisors, academics, and liars, service providers, those who need social services, test takers, policy developers, dictionary makers, translators, or a whole range of business clients. So business clients, businessmen, dictionary makers, policy developers, or translators, or service providers, or employers, test takers, lawyers, academics, supervisors, teachers, learners, ये रियल लाइफ की तमाम ये इश्यूज रियल लाइफ के हैं. तमाम ये जितनी प्रैक्टिस यहाँ पर डिस्कस हुई हैं एजुकेशन के हवाले से, तमाम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें हम we use the notion and concept and you can say of applied linguistics. Okay, अब हम देखते हैं कि यस रियल वर्ल्ड के अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस, यू कैन से वी हैव टू एनकाउंटर, वी हैव टू कम अक्रॉस, वी हैव टू कॉन्फ्रंट. All these problems are solved, all these problems are, you can say, discussed, all these problems are addressed with the help of applied linguistics, or you can say by using the concepts of applied linguistics. Okay, और इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स विद अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, और यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड सी लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. व्हाट इज द डिफरेंस? लिंग्विस्टिक्स सिंपली इट इज a scientific study of language. Simply, there is no applied, there is no word applied. Applied mean applications in real life, benefits, usages of language in real life, that is applied. How we can use language to address the vocabulary that we are facing, new vocabulary in COVID-19 problem, in Omicron problem, we see and we face different vocabulary words and different बहुत सारे new words आ रहे हैं. अब इन problems को solve करने के लिए हमें linguistics नहीं, applied linguistics हमें मदद करेगी, क्योंकि वहाँ पर semantics, pragmatics और different frames से हम एक ही सिचुएशन को देखेंगे और उसका मसला हल करेंगे. जबकि लिंग्विस्टिक्स में एक ही फ्रेम ऑफ वर्क यूज किया जाता है, उसमें डिफरेंट लेंसेज को यूज नहीं किया जाता. ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है जिसके अंदर हम इट एनिवोर्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज लैंग्वेज एंड हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड इन द माइंड. इट इज दिस. ओके, व्हाट इज लैंग्वेज एक चीज, दूसरा हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड इन द माइंड, माइंड में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज द थिंग.
कि mind may represent no practical things. It is not concerned with practical problems that you face in your real life, no, but the aim and objective, and you can say the usage of this linguistics is only limited to language concerning problems, and that is how is represented in mind. यानी structure से टेंस स्ट्रक्चर, वर्ब स्ट्रक्चर, वर्ब पैटर्न और जो है वो लेक्सिकल डिस्कशंस, बस इससे रिलेटेड इसकी सारी डिस्कशंस हैं, ठीक है। और अप्लाइड के अंदर ओरिएंटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम, ओरिएंटेड to the solution of linguistics problem. It puts linguistic theories into practice in areas such as foreign language teaching, speech therapy, translation, and speech pathology. All these problems we discuss here. Real life की जितनी problems हैं we address, you can say solve, we face it with the help of applied linguistics. But linguistics is only what is language, and to answer the question what is language and how is it represented in mind, yani how we can speak to other person, okay, with the help of sentence structure, verbs, and these things grammatically, and you can say with very limitations of concepts, limits of concepts. There is no vastness, there is no broadness, there is no different concepts we can use. In the help of सिंपली यूँ समझें कि लैंग्वेज क्या है और उसको कैसे बोलना है, माइंड के अंदर उसका क्या सेटअप है, क्या फ्रेमवर्क है, ये है लिंग्विस्टिक्स। यानी वो जो थेरीज नोम चोम्स्की और दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी, लीसा सोरे और उन्होंने, वो सारी जो थेरीज हैं वो लिंग्विस्टिक्स हैं। लेकिन अप्लाइड ये theoretical discussions नहीं है, बल्कि ये practical discussions है। There is a difference between theoretical discussions and practical discussions, okay? So practical discussions of a language, that is problem solving strategy, that is applied, or simply theoretical discussion of a language, that is linguistics, that is linguistics. What is language and how it is represented in mind? Lexical discussions and signs, signified discussions, Saussure's concepts, and Noam Chomsky's concept, that is about linguistics and theoretical linguistics, not about applied. Okay, so applied जब बात आ जाती है इसका मतलब कि applications यानी रियल लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, it would address those problems. Okay, तो आगे हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स विद अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, इसको हम नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।